So now we have covered entire division. Any doubt in division? No, sir. Still, if you find any doubt, next batch is going on, so you can anytime come in between. Now the new topic is HCF and LCM. Now up till class 6, this is very, very important topic. And generally in entrance examinations, such questions are asked on this. So do you remember HCF and LCM? What is HCF? Highest common factor. And what is LCM? Lowest common multiple. Least common multiplier or the lowest common multiple. Perfect. So do you know how to find out HCF and LCM of 12 and 14? If Yes. these are the two numbers, yes. So which method you will follow? So first I will write factors of 12 and then I will write factors of 14. So 12 factors are 2 into 2 into 3, correct? Yes, sir. Factors of 14 are 2 into 2 7. into 7. So what is Common HCF? So in both of them, common is 2. So common 2 will be taken. So HCF would be 2. And what 2. is now LCM? LCM is common multiple. We will write the table of 12 and table of 14 and find out what is the common multiple in them. Okay. Or that means chaliye. From here you cannot find. Yes, sir. From here itself you cannot find. Yeah, we can. 6 7s are 42. So only 6 7s are 42. So least common multiple, na? Yes. No, it is not. See, I'll tell you, whatever is pending, we take that. Yeah. And so basically, LCM is what? HCF into whatever is pending. Okay. This is known as, I'll explain it. So it would be 84. 84. Now this is called as factorization method. Yes, Umesh, do you know this method? Yes, sir. So this is known as factorization method of finding HCF and LCM. We have one more method, division method. 12, 14. So 2, 6, 7. Again with 2. Again with 2. Yeah, 6 will be divided by 2. Na? 7 is not divisible. So then what we'll do? Nothing. Not required. Yeah. Now this is common factor. And these are non-common factors. So the common factor is termed as HCF. HCF. And LCM is common factor, which is HCF into non-common factors. So that was the reason 2 into 6 into 7 was your Answer. Yeah. now both the methods clear. Yes, sir. So these are the methods of your mathematics. Now coming to Vedic mathematics technique. So if two numbers are given 12 and 14, you can take them in ratio. Right? The Anurpena Sutra. Any ratio, either you can have it 12 by 14 or you can have 14 by 12, whatever you wish. Now reduce to maximum. So again, 2 6s are 2 7s are. Now it cannot be further reduced. No. 7 by 6. Now HCF is
2. If I call it as N1, so HCF is N1 by N2 or D1 by D2. Did you understand what is D, what is N? N means numerator 1, N2 means numerator 2, D1 means denominator 1, D2 means denominator. So it can be 12 by 6 or 14 by 7, that is equal to 2. Here also, the format is different because you have taken different numbers. So 14 by 7 or 12 by 6, here also same, again 2. So it will remain the same. And talking about LCM, LCM is found by cross multiplication, Urdhva Sutra. So it would be N1 D2 or D1 N2. So either 14 into 6 is 84 or 12 into 7 is 84. So LCM is 84. Is it clear now? Yes, sir. Yes, Umesh? Yes, sir, clear, sir. Okay. So very simple thing. Another simple example. 12, So 20. जिसको रेशियो निकाल दे उसको अनुपायना सूत्र बोलते हैं सर. हाँ. सर ये सब सूत्र है कि सूत्र है? अनुपेना सूत्र है एक. ओके. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है. क्या होता है कि अब जैसे यवादुमन जो है वो बेसिकली सब सूत्रा है, निखिलम सूत्रा है. बट जब हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, वी कॉल इट एज अ निखिलम सूत्रा बेस मेथड. व्हेन वी आर डूइंग योर स्केयरिंग, सो वी हैव अ डेफिनेशन, व्हाटएवर इज द डेफिशिएंसी, लेसन इट फर्दर. वो एक यवादुमन सूत्रा आ जाता है. सूत्रा नहीं है, इट इज अ सब सूत्रा, बट यस we generally call it as like that, right? Now 24 by 28. So what is the common thing? 4 table. Yes. So that means, just give me a second. 6 by 7. Yes. So HCF is equal to 24 by 6, that is 4, or 28 by 7, that is equal to 4. And LCM is 24 into 7 or 28 into 6. Now is it clear? See, Joe, Yes. the confusion you had, like either you were confused there. Yes, sir. Now the confusion is, if you can get confused, every student get confused. You said, let's go for a table. Yes, everybody get confused. If we have already found this, how to find it? So generally here it is more clear, common factor and non-common factor. But again, if we had one more number, let's say 3, 18, at that time, now these two can be done. Now here it is a very big mistake. Now 3 cannot be multiplied by 7, but it is kept like this only. Yeah. So at such situations you face difficulty ki wow, where I'm wrong. Right. So we'll do 3 also. Yeah. So first is one more, you do it. I'll give you one question. Davis क्या है दोगे? एक आधा पीस, एक पीस ना दे, छोड़ दो एक. Yeah, sorry. So
you can have 42 and two numbers are 42 and 63. Do it. So what are yes, what is the HCF? HCF is 21. Okay, and LCM? LCM just a minute. LCM 126. Yes, Ether, what about you? Yeah, 126 LCM. Got it? Yes, sir. Chalo. One small more. So it's more easy. 1824. SCF 6, LCM 72. Yes, sir. HCF is 6 and LCM is 70. Very good. So there, I don't think there is now any chance of any confusion. See, the point is confusion should be released. Okay, last 2490. SCF 6, LCM 360. Very good. Yes, Ether. Just a minute. Yeah. Yeah. Yes, sir. HCF is 6. Mhm. LCM I'm finding. Not so much of time should be there. You should not take so much of time. Sir, one mistake was done. That's why it took time. Yeah, HCF is 6 and LCM is 360. Okay. Done. Now, any Yes, doubt sir. when you have to find LCF, LCM of two numbers? No, See, sir. if I talk about class 6, this is very important topic. And in SAVIC examinations, you get around 4 to 5 questions. So you can very well understand how much weightage this carries. And to have practice on LCM, HCF, go to Quora, go to my channel, you see number of questions because people get confused. Okay, let me ask you a question, then you'll understand. So 10, 14, 20. Can you find HCF and LCM using your method first? I'll give you for Vedic maths method for 3 digits, but try to find it out by your division method only, because there is always a confusion in or I'll tell you. See, where do students get confused? To
5, 7, 10. Now, these two are divisible by 5. This is not. Yeah. But still we do 5, 1, 7. 1. Now, if we think in another way, we are carrying out division process and this is kept constant. So it's a very confusing part. So HCF becomes, yes, what is HCF? HCF 2 only. Sure. And Yes, what sir. is an LCM? LCM 140. So LCM is 2 into 5 into 7 into 7 into 2. so 140. See, now this was a confusion. If we were not supposed to add this 5, why it was done? Here, but at Yes. your age, you might remember it. But at the age of the children, they get confused, right? Okay, now see how we will do in this. First, take any two numbers. Now the numbers are 10, 14, 20. Any two numbers you can take. First step. Let's say I take 10 and 14. So that means 5 and 7. Yeah. So H1, I'm putting HCF as H1. So H1 is equal to 2. Any doubt? No doubt, sir. L1 is equal to 70. Any doubt? No doubt. So second, final HCF. I can have H1 below second number or 20 and H1 down anyway. So that is 2 by 20. How if I reduce it is 1 by 10? Yeah, 1 by 10. So what is the final? If you see 2 by 1, it is 2 only. Yeah. Final LCM. L1 divided by 20. So 70 by 20 is equal to 7 by 2. So that Yes, means sir. 140. Any questions now? Just No observe it, questions. write down. If you have any question, you can ask. No questions, sir. Yes, Umesh. सर सिक्वेंशियली 4 डिजिट 5 डिजिट का हो तो S2 S3 से ले जाना पड़ेगा। अभी पहले 3 डिजिट खत्म कर लें, 4 भी करेंगे। 3 का तो हो गया। हो गया? हाँ। बड़ी स्पीड। चलिए एक क्वेश्चन करिए फिर। 12 क्या हो गया? तबीयत खराब होगी? थोड़ी सी सर। ठंड है क्या वहां? मौसम कैसा है? मौसम तो ठीक ही है। 12, 18 and 30. Please do both.
Done. Yes, sir. HCF is 6 and Okay. LCF is 180. आपका क्या आया? मेरा 12/18 2/3. So SCF आया मेरा 2, LCM आया 60. दोनों का अलग अलग। चेक करो। कोई एक तो गलत कर रहा है। किसी एक का तो गलत है। SCF आना चाहिए, वैसे तो 6 आया हाँ। इस तरह में। Yes, sir. Yes, sir. तो आपका SCF 6 आना चाहिए। 6, तो आपका गलत LCM is 180. 12 मेरा आया 12/18 2/3. एक मिनट में पानी ठीक। लाया करो। 12/18 2/3. 3 इसका H1 आया H1 है 6. हाँ, L1 है 36. L1 है 36. 36 बराबर। हाँ फाइनल तो फिर HCF 6/30. 6/30 इसको डिवाइड किया 6 से तो 1/5 आया। 1/5 वो भी ठीक है। हाँ हाँ, मतलब 6 से ये- डिवाइड किया इसलिए 6 से HCF है। और LCM है 36/30, तो उसको डिवाइड किया तो 6/5। ओ सॉरी यहाँ पे मेरा क्या हुआ, 6/30 किए तो 2/10 लिख दिए, फिर 1/5 आया, 2 को 1 से डिवाइड कर दिया तो 2 निकल गया। इसीलिए तो बोला था अभी 3 डिजिट पेंडिंग है। जल्दबाजी नहीं होती। मैं क्लास खत्म करने के चक्कर में नहीं रहता कभी भी। जब तक 3 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएंगे ना, तब तक मुझे भी भरोसा नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन है 8, 18, 24। 8, 18 and 24. 8, 18, 24 करिए। SCF 2, LCM 72. यस LCM क्या आया सर? 2 HCF 2 होगा। SCF 2 HCF 2, LCM 216. 72 216. हाँ, करो चेक। दोनों चेक करो दोनों। 24 3 जा 72, 18 4 जा 72, 8 9 जा 72. हाँ 8 9 से 70. सो लोएस्ट कॉमन फैक्टर तो 72 हुआ ना। मिनट से कुछ तो गलत किया। 72 हो गया। हाँ 72 बराबर।
Okay. LCM 72. Yeah. Now, if it is 4 digits, नहीं करना आपको, I'll tell you. 15, 20, 30, 35. Now, first take H1 of this, H2 of this. कोई दो pair, मतलब not only this, you can take this and this or that. Then final इनमें से निकाल. Got my point? First make 2 pairs and then find out. Can you do this? Yes, sir. Okay, let In the us try. meantime, Yeah. Pallavi, in the meantime, you listen what we are doing. Okay. So Pallavi, do you know what is LCM HCF? Yes. Okay, if I give you a question 12 and 14, how will you find out? Okay, I'll explain you. Now to find LCM and HCF in mathematics, there are 2 ways. One is factorization and another is called as division method. Hmm. Now factorization is like this. Factors of 12 are 2, 2 into 3, correct? Yes. And 14 are 2 into 7. Any other? Seven. No. So HCF is the common one, 2. Got it? Yes. And whatever is left, that multiplied with HCF gives me the LCM. Yeah. This is known as factorization method. Now we go for your division method, which we have already done. So 2, 12 and 14. So get 6 and 7, Hmm. correct? Yes. Now 2 is Yes. known as common factor. 6 and Hmm. 7 are called as uncommon or non-common factors. Agreed? Yes. So what is HCF? It is a common factor. Finish. What is LCM? That is common factor into non-common factors. Correct? Yes. So we get 2 into 6 into 7 and we find 84. Same. See, we got it then by the factorization method. Now we got it by division method. Now we come to the Vedic mathematics method. This we have already done. Now in Vedic mathematics, either you can take, we have to take them in a ratio and reduce to the minimum. So either we can take 12 by 14 or 14 by 12 because the numbers are 12 and 14. If I take 12 by 14, the ratio is 6 by 7, correct? Yes. So HCF is N1 by N2, means N1 is this, N2 is this. So either N1 by N2 or D1 by D2. Got it? So Yes. that is either 12 by 6 or 14 by 7. So it is 2. And LCM, it is cross multiplication. So it is either N1 and D2 or D1 and 2. Got it? Yes. So this is And how we can solve it. So then we solved a 3 digits. So now suppose there are 3 numbers, 10, 14, 20. How to solve it? So first is 10. I took two numbers, 10 and 14. I can take 10 and 20 also. Any 2 numbers you can take, right? So 10 and 14 means 5 and 7 decrease to. yes. So H1 becomes 2 and L1 becomes 70. 7. See, if any question is there, you can ask. No, sir. So final HCF is H1, this H1 and the third number we take now.
So 2 by 20, that is, again, we are reducing 1 to 10. So what is HCF? It is always N1, N2, N1 by N2. So 2 by 1 is 2, or 20 by 10 is 2. And final LCM, 70 by 20, that is 7 by 2. We cross multiply and we get it. Got it? हाँ, वो 1/10 के बाद 2 कैसे आया ना, वो थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूज हो गया। वो इसलिए कंफ्यूज हुआ, ये हमने रेशियो ही लिखा है, और HCF में क्या आता है, N1 by N2 आएगा ना, 2 by 1 आएगा ना, या 20 by 10, हाँ, वो वही रहेगा, मैथ कंसेप्ट वही रहेगा। अच्छा, ठीक है, हाँ, ठीक है। यस, सो आई विल सॉल्व। Sir, हाँ बोलो। HCF is 5 and LCM is 420. Now everyone see. First, let's calculate slow. Palvi, आप भी करो. Now first yes. I take 15 and 20. So that means 3 by 4. By 4. Yeah. So H1 कितना आया? 5. Yes, Pallavi, what would be the H1? Mm, How do you calculate HCF? N1 by N2 करना ना। हाँ, तो 15 by 3 कितना आया? 5। या 20 by 4 भी करेंगे तब भी 5 आएगा, दोनों केसेस में वही रहेगा। और L1 के लिए 20 into 3 या 15 into 4 हो गया 60। कोई डाउट? नो। ओके, अभी इधर हमने दूसरी तरफ इन दो का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। सो 30 and 35, ये भी 6 by 7 हो गया। Yes. So that means H2 is equal to 5 5. and L2 is equal to 210. yes, any doubt, Pallavi? नो डाउट सर। So अब फाइनल HCF क्या होगा? H1 by H2 और L1 H2 by H1, कोई ऊपर कोई नीचे कर लो आप। So 5 by 5 उसका क्या आता है रेशो? 1:1। 7. So that means क्या आएगा? 5। आप यहाँ कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं पल्लवी? आप काटते हो कि 5 को 5 से काटा तो 1 आ गया। हाँ, No, you have to bring to the least multiple first. ओके। इसको क्रॉस नहीं करना, काटना नहीं है, इसको रेशियो में लेके, that is you have to do. Got it? This was your confusion. और L1 में फाइनल LCM क्या होगा? 60 L1 by by 210. So that means now this is 6 by 2 by 20 7. कर सकते हैं, फिर 2 by 7 कर सकते हैं। करेक्ट, 2 by 7 is the final. So Yeah. क्या होता है? 420. 420. Got it? Yes. Yes, Ether, उमेश। Yes, sir, got it. गॉट इट सर। चलिए, पल्लवी समझ आ गया आपके अभी भी? चलो एक क्वेश्चन और हाँ, करते आगे। हैं। 16, 24, 40, 56।
Yes, what is the answer? Sir, HCF is 8 and LCM is 1680. Yes. Others? उमेश क्या आंसर आया? सेम सर. पल्लवी? CF आ गया 16 सर, LCM में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया फिर से फाइनल LCM में 48/280 आया, फिर उसके बाद क्या करना वहां पे कंफ्यूजन हुआ है। चलिए 5 का करके बताता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। देखो स्टेप बाय स्टेप चलोगे, कहीं भी दिक्कत नहीं आता, बट यस फिर भी I'll solve 1, 6, 12, 18, 30, 36। सपोज ये 5 है, पहले इन दो को पेयर बना लो, इन दो को पेयर बना लो, इनमें से फाइनल निकाल लो, whatever is final here then do with this. So let it be H1, H2, this is your H3, let it, and then final you can, got it? एक बार करके देखो, अगर प्रॉब्लम आता है तो I'll solve. पल्लवी ये छोटा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। ओके सर। Sir, HCF is 6 and LCM is 180. उमेश? सेम सर. पल्लवी? कर रही हूँ सर, लास्ट चल रहा है, लास्ट। कोई बात नहीं।
Yes, Pallavi, what happened? पता नहीं सर, मैं लेकिन कर लूंगी सर बाद में, मैं वीडियो देख के। ऐसे नहीं, मैं कर देता हूँ। वो सडन यहाँ से यहाँ वो ये हो गया ना थोड़ा सा, इसलिए। कोई बात नहीं, ये देखो अभी ध्यान से देखो और बताना गलती कहाँ हुई थी बस। अगर आपको प्रॉब्लम समझ आ गई, देखो फर्स्ट मैंने ये 2 को लिया, 6/12, 1/, 6/2। what is H1? 6, L1 is 12. कोई डाउट? नो सर। आपका क्या आया था? मैंने हाँ, आ गया सर समझ में कहाँ पे गलती हो गई थी। 1830. So 1830 का मतलब है 3/5. 6 3s are 18, 6 5s are 30. So H2 is equal to 6. L2 is equal to 90. Any doubt? नो सर। ठीक है, यहीं पे हम फाइनल निकाल लेते हैं। फाइनल H1, so 6/6, that is equal to 1/1. Now don't do it 6/6 1 हो गया, no. हाँ यहाँ यही कर रही हूँ, यहाँ पे ऐसे हो रहा है। So it is 6 only. And final L, अभी I'm doing for 4 only. 12/90, so that is 2/15. 6 to the 12, 6 15 the 90. So कितना आया L? 90 into 2 is 180. Up till here any doubt? अब लास्ट नंबर ले लेते हैं 36. लास्ट नंबर 36 को भी ऐड करना है. So H1, H, final H, 6 divided by 36, 1/6. So कितना आया? 6/1, 6 only. And L, 180 divided by 36. So कितना आएगा? 36 5s are. अच्छा Multiply किया. So what is this? L is 180 only. Got it? Or any question you have? नो सर, नाउ गॉट इट। फिर one question exercise का 12, oh sorry, not 16, 48, 64, 80, 112. So 5 digits का ये निकालिए.
Yes, what is the answer? Just a minute, sir. Yes, sir. HCF is 16 and LCM is 784. Okay. Yes, Umesh. SCF is 16, LCM कर रहा हूँ सर. Sorry, sir. LCM is wrong. Yeah, LCM is 6720. Yes, Pallavi. 6720. Yeah, correct. Okay. So done. Now, see, this is one question. These are the direct questions which comes find HCF and LCM. But we also get different other types of questions. For example, if ratio is 3:4, HCF is 4. What is LCM? Can you think? If the ratio of the numbers is 3:4, HCF is given 4. What is LCM? Can anyone find? Let us try. Let us try. So such questions are also asked. So again, for this particular topic, I have solved so many questions on Quora. So you should see the profile. Then around 50 plus questions I have solved already. So LCM will be 48. Okay, how? So we will multiply 3/4 with 4. So we will get 12/16. Then we will do cross multiplication to get the LCM. So what would be the numbers then? Numbers will be 3 into 4, 12, and 4 into 4, 16. So 12/16. Yes, Pallavi. Pallavi, Yes, sir. क्या समझ आया इससे? अभी नहीं आया सर. बोलोगे तो पूछना तो पड़ेगा ना. उमेश, Yes, sir. क्या समझ आया? किस में से? इसमें से? यही क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसी के बारे में पूछूंगा, और तो कुछ पूछूंगा नहीं मैं इस टाइम. नहीं नहीं, मैं सोच रहा था ये रेशियो वाला क्वेश्चन में कि आगे वाला LCM HCF पे. क्वेश्चन तो एक ही है, पूरा क्वेश्चन है. उसमें व्हाट इज रेशियो दी हुई है, HCF दिया हुआ है, LCM मांगा है. क्या करोगे? LCM तो मेरा 48 आया. कैसे आया? मैंने किया
मैंने क्या, let us consider two number are x and y. x divided y equal to 3/4. So यहाँ से आ गया SCF equal to x/3, 4 equal to x/3, तो x equal to 12. आपने किया let the numbers be x and y 3/4. Equal to 3/4. Yeah. तो आपने LCM क्या कर दिया? पहले तो x फाइंड आउट करे. अच्छा चलो x कैसे करेंगे बोलो? We have a SCF, so SCF means SCF equal to x/3 or y/4. x/3 और SCF y/4 y/4. ठीक है is equal to 4. 4. अच्छा तो x कितना आ गया? x आया 12, y आया 16. मुझे 12 समझ नहीं आ रहा कैसे किया आपने x? सर SCF equal to x/3. SCF का वैल्यू हमारे पास दिया है 4. अच्छा x is equal to 12. Yeah. y Y is equal to 16. ओके दो नंबर भी आ गए, तो अब तो 12/16 इक्वल टू 3/4 हो गया. ठीक है. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे तो आना है 48. मैं इसका सिंपल दूं? y फाइंड आउट ना भी कर सकते हो, वहीं भी Yes. आ गया. whenever you are given in a ratio, why don't you Okay. take the numbers, let the numbers be 3a and 3 and 4a. Okay. भाई रेशियो तो है. हाँ. 3a 4a is equal to 3/4. Oh good. HCF कितना हो गया? 4. a SCF A हो गया. a कितना हो गया? 4. ओ So numbers क्या आ गए? 12 and 16. and 16. क्योंकि हाँ. a की वैल्यू पुट कर दी आपने. आप जब दो हाँ. देखो बच्चों को जितना सिंप्लीफाई करोगे उतना इजी है. आपने दो प्रॉपर्टीज डाल दी x और y. जब हमें हाँ. रेशियो दिया ही गया है सो वी कैन मेक इट सिंपल. सो एलसीएम कितना है? अब देखो अब वही बात. 3a into 4, 3a into 4 और 4a into 3 जो भी लिखो. 12 into 4 48. हाँ. गॉट इट? या. यस पल्लवी अब समझ आया? यस सर. देखो इसके क्वेश्चंस तो आपको वहीं से मिलेंगे क्योंकि ये बुक में नहीं था, पर मैंने इसलिए करा दिया. एक पॉइंट याद रखना हमेशा, जब भी दो नंबर्स होते हैं a एंड b, whenever two numbers, ये लैंग्वेज वाले, this was the point we discussed yesterday and ask me now also, कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस बच्चों को समझ नहीं आते हैं. तो द प्रॉब्लम इज दे डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. इंग्लिश की कमी आ जाती है. तो ऐसे ही ऑलवेज रिमेंबर, अगर दो नंबर्स हैं a इंटू बी, सो दैट इज इक्वल टू HCF इंटू LCM. ये होना ही होना है. आप कोई भी अभी तक का केस ले लो, आपने 12 और 14 किया था पहला. 2 6 7. So we said HCF is equal to 2 and LCM हमने किया 2 into 6 into 7. But HCF into LCM कितना हुआ? ये हो गया था आपका 84 और HCF into LCM कितना है? कितना हुआ फिर? 168. और अगर आप 12 into 14 कितना होता है? 168 हुआ.
So always remember this. ओके, चेक पॉइंट तो चेक पॉइंट ये है कि a इंटू बी किए तो एचसीएफ इंटू एलसीएम होना पड़ेगा। होता ही है, हाँ, ये इसलिए भी है। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये पॉइंट आपको करना पड़ेगा। ये इसीलिए बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं, वो ये छोटा सा पॉइंट भूल जाते हैं क्योंकि बताया नहीं गया होता ना, डायरेक्टली नहीं बताया गया। फाइंड आउट करना आता है सबको। HCF इज इक्वल टू 2, LCM इज इक्वल टू 24, A plus B is equal to 14. So what is A and B? Pallavi, try karo please. Try. Come. Yes. करिए। Yes, उमेश। यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम दिए, a प्लस बी दे दिए, कनेक्ट कर नहीं पा रहा हूँ सर, किसको कहाँ पे कनेक्ट करूँ? दिमाग पे जोर दो ना। अभी एक पहले बताया तो था, 1 मिनट से कम टाइम पहले बताया मैंने। a इंटू बी इक्वल टू तो 48 हो गया, वो तो उसमें समस्या नहीं। a प्लस बी इक्वल टू 14 हो गया, उसमें समस्या नहीं। ओके, प्लेसिंग करे। सब कुछ मैं कर दूं? नहीं, रुकिए सर। यस ईथर। सर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, 1 मिनट। क्यों नहीं हो पा रहा? A plus B is 14. इसको बार बार रिपीट करके कुछ मिलेगा? पल्लवी, पल्लवी, यस पल्लवी, and 8. ले ए बी कितना है? 48। नंबर आया मेरा b प्लस माइनस 6। हाँ, ए बी 48 आ गया। ये इज इट करेक्ट ईथर? AB 48, हाँ। तो देखो ए क्या हुआ, 48 बाय बी। हाँ, Yes. यहाँ पे डाल दो ना, 48 बाय बी प्लस बी इज इक्वल टू 14। मेरा आया a आया 8, b आया 6। तो बी स्क्वायर माइनस 14 बी प्लस 48
इज इक्वल टू 6 0। 0 तो बी क्या आ b जाएगा? माइनस बी b 8 स्क्वायर आ जाएगा या 6 आ जाएगा? अगर बी 8 है तो ए 6 है, ए 6 है हाँ तो नंबर्स आर आइदर 8 एंड नंबर्स आर 6 एंड 8, 6 एंड 8 ही होगा, तभी एलसीएम 2 आएगा। हाँ ये यही प्रॉब्लम आती है पेपर में, कनेक्ट नहीं कर पाते स्टूडेंट्स। अगर इसका एक और फॉर्मेट भी है करने का, देखो हमें पता है फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सबको आता है। Yes. ऐसे ही a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए a स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2ab minus प्लस b स्क्वायर। करेक्ट। Correct. अगर मैं, अब मेरे को देखो ए बी है मेरे पास, ये तो मुझे है ही नहीं, सो मैं लेट्स से आई विल चेंज द साइन, 4ab आ गया, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, मैं इधर 4ab को ले आता हूँ और उधर a माइनस बी होल स्क्वायर कर देता हूँ। चल सकता है ऐसे? हो जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है हमें, कितनी दी हुई है? 14 सो 14 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी की 48, हाँ कितना है? 48 14 स्क्वायर कितना होगा? 256? नहीं, 256 इतना ही होता है मेरे ख्याल। नहीं, Yes. 256 सब भूल गए सब। 196. 196. ओ, 256 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 225 से कम आना है। 15 स्क्वायर इज, देखो हर चीज को याद रखो, 192. कितना आ गया? 4। तो a माइनस बी कितना आया? 2। अगर आपको वैसे नहीं होता, मतलब स्क्वायर का आके फैक्टर्स नहीं बनाए जाते, तो a माइनस बी इक्वल टू 2 यहाँ तक आ गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा ना। ये लो, a प्लस बी कितना था? a प्लस बी 14, a माइनस बी 2, एडिशन कर दो, 2a इक्वल टू 16, a इक्वल टू 8। तो b कितना आ गया? 6। सो ये फॉर्मूला अगर हम याद रखें तो भी हम कर सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, ऐसी कंडीशंस आएंगी आपके पास, एलसीएम एचसीएफ दे दिया होगा और a प्लस बी दिया होगा या a माइनस बी दिया होगा, यहीं पे बच्चे कनेक्ट कर। सर सर ये क्वेश्चन क्या था कि मैं परसों इंटरनेट में सफर कर रहा था, तो सफरिंग वेव्स ऑफ बोलते हैं। नहीं, सर्फिंग इज समथिंग डिफरेंट और सफर में बहुत फर्क है। सफर करना मतलब, चलो मिस स्पेल। हाँ, सर्फिंग, इंटरनेट सर्फिंग कर रहा था, स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो अच्छा। उसमें दिखाया था कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स इज आर्किमिडीज। सो आर्किमिडीज तो 17th सेंचुरी तक था, नहीं? मैंने आपको फादर ऑफ मैथ्स तो कभी बताया ही नहीं। नहीं, वो इंटरनेट में डाला था, 17th सेंचुरी था। अच्छा। और जो वैदिक का रिसर्च है वो निकला है 18th सेंचुरी में। तो उससे मतलब क्या कंसर्न क्या है? कंफ्यूजन ये है कि तो उन्होंने पहले वेद पढ़ के इस चीज की किसने किसको करा जब हम थे नहीं, हम इस बहस को, ये इररिलेवेंट टॉपिक को मत छेड़ो। इसका क्या निकलेगा हम निकाल ही नहीं सकते। ओके हम कैसे निकालेंगे बोलो? ओके क्या हम वहां थे? ओके नहीं मतलब प्रॉब्लम को उसका समझो। कोई नहीं उमेश, आप ना इलॉजिकल टॉपिक से पूछ जाते हो। ओके, ये कंक्लूजन नहीं है, ये टॉपिक ये कभी खत्म ही नहीं होगा ये टॉपिक। और मेरा क्वेश्चन क्या है कि
जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स था उसमें भी ऐसे ही लॉजिक करके हम कोई थर्ड सेमेस्टर कोई टॉपिक था, याद नहीं आ रहा है मुझे, उसमें भी ऐसे हम आंसर्स निकालते थे। उसमें पोलिनोमियल इक्वेशन टाइप का कोई क्वेश्चन था। आएगा अभी। तो नहीं, वो तो सिंपल सा, उसमें वो क्या था टॉपिक याद नहीं आ रहा है मुझे। जब टॉपिक याद आएगा तभी डिस्कस करेंगे ना, अभी क्या करें। तो डेरिवेशन तो सेम टाइप के डेरिवेशन होते थे दोनों में, इसमें भी वही डेरिवेशन हो रहा है, उसमें भी वही डेरिवेशन हो रहा है, ये बोलना था मुझे। क्या डेरिवेशन मतलब जो हमने सॉल्यूशन का जो आगे वाला, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का तो इजी वाला मेथड है, ये जो फाइंड कर रहे हैं हम। इट्स नॉट इजी और इजी। अब प्रॉब्लम को समझना नहीं चाह रहे हो। प्रॉब्लम क्या यहाँ ये आ रही है कि एलसीएम हाँ। एचसीएफ करना तो आ गया आपको। हाँ अगर इतना ही क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, नंबर्स बताइए, हाउ विल यू फाइंड इट आउट। या एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ है प्लस नंबर्स का एडिशन दिया हुआ है, हाउ विल यू फाइंड इट आउट। रेशो दी हुई है, जैसे आप एक्स वाई रेशो ले गए, अब एक्स वाई लेके बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। सो आई एम जस्ट गिविंग यू हाउ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व। ये क्वेश्चंस सैनिक स्कूल हमारे यहाँ एग्जामिनेशंस होते हैं, बहुत बहुत बड़ा एग्जाम माना जाता है, तो उनमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। दैट्स व्हाई आई टॉट यू। ओके, आफ्टर मैट्रिक्स, ओके सर, आफ्टर मैट्रिक्स का क्वेश्चन, आफ्टर मैट्रिक्स मतलब वो 10th पास करके 11 12 के लिए सिक्स के लिए एग्जाम में, बता रहा हूँ भैया मैं, सिक्स के लिए सैनिक एग्जाम बोल। 6th क्लास के एग्जाम में। हाँ जी। ओके ठीक है, चलो एनी क्वेश्चंस नाउ। बट इसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आपको लगता है ना कि हमें आ गया, देखो प्रैक्टिस करोगे तभी निकलेंगे, और प्रैक्टिस इनकी भी चाहिए। यहाँ भी कंफ्यूजन होती है हमें, like we were not able to connect this. A plus B was given, AB was given. No, we were not connecting it. Got the point? Yes. So this was all about LCM, HCF. Now a very simple topic which is generally in class 3rd, 4th, that is fractions. And students have a very big, they find it difficult in this. Why? I'll tell you why. I'll give you examples. So addition of fraction is a topic where they find difficulty. For example, 7 by 8 plus 4 by 5. Now what we are asked to find LCM of denominator. LCM. That means in a question of simple fractions, you ask first to find out LCM. एक बड़ा जिम्मेवारी पहले ही दे दी. So you find LCM 40. Then second, they have to observe what is less. They try to divide this number D1 with LCM and they find what is the quotient, and that quotient they multiply with 7. For example, here it is 5 times. The quotient becomes 5. So 7 is multiplied by 5. And here it is 8 times. So 4 is multiplied by 8. Now this was a very simple question. Why? Because there was nothing common in between. Now see one more question. 3 by 10 plus 4 by 15. Now if you see here, now while finding the LCM is 30. Right? It's not direct multiplication. So you have to again think. So first step you did LCM. Second step you divide this LCM with this denominator. So answer is 3. That 3 you multiply with this 3. So 3 into 3 plus 4 into 2. That means LCM of the denominator. First step you are finding. At second step you are finding for every ratio or quotient
I would say quotient of LCM divided by D1, and then LCM divided by D2. Third step, here two steps are there. Third step, you multiply Q1 with N1 and Q2 with N2. And this is where students get confused. Yes, so many steps, 5 steps are there in actual. Now, Vedic maths gives a very simple solution to it. See now, 7 by 8 plus 4 by 5. Multiply denominators. Nothing, no LCM, no HCF. Multiply denominators. Cross multiply. That's all. So 7 into 5 plus 4 into 8, 40. In second case, it was 3, 10 plus 4 by 15. So for you, it was coming 30 LCM. No issues, 150 only. 75 plus 40, 105 divided by 150. And later, 45, 45, sir. No 75, 45. Sorry, 85. So 5, 30, 5, 17. Finish. So see, instead of those 5 steps, it's very simple. Cross multiply the numerators with denominator and multiply the denominators, and your work is done. So this is a difference. Working style. Maybe in class, some teachers might teach this thing. You don't find the denominator, you can do this way also. But that depends on a teacher to teacher. But if we go officially, syllabus wise or book wise, it is always these 3 steps. And try to understand how difficult it is to remember for a child of, because this fraction is a topic of 3rd class and 4th class. Is it clear now? Yes, sir. And then you have mixed fractions also, that can also be done. So I'll give you one question. You try to find it out first. Now see, I'll give you one mix also. 5, 4 by 7 plus 2, 1 by 7. So what is this? Mixed fraction. Yes. So how do you find out this way? So whole number we will add together, and afterwards we will add fractions. So that means you can have 7 plus 4 5 by by 5 7. by 7. sorry, okay, for 7, then it is very easy. 7 plus 5 by 7. Right? Then Yeah, so so it can be done, written in the mixed format as same here, right? yes, sir. Now, if it was instead of this, if it was 2, then what will happen? Whole numbers we would have added like this only, means 5 plus 2, 7, and afterwards fractions we will have find the LCM and do it. Again, LCM. So here we will not go for
LCM will go, Denominator to denominator multiplication. so we'll go like this, 4 by 7 plus 1 by 2. So that means 14. 14. 2 4 8. 8 plus 7 Plus cross 7. multiplied. 15. That's a simple thing. So 15 by 14. Now 15 by 14 means 1 by 14. Any doubt? No doubts. 7 plus 1 again 8. Yes, उमेश, कोई डाउट इसमें? No doubt. So 7 और 1 को हम जोड़ सकते हैं. It would be 8 1 by 14. Yes, Pallavi, any questions you have? Pallavi, Yes, sir. any questions you have? No, sir. No question. Is it clear now? Yes, sir. Fifth Okay. standard के book में है second method भी. फोर्थ फिफ्थ में है. मैंने वही बोला, कई जगह दिया भी हो सकता है कि, but I gave you the difference how we were taught initially. This is what we are taught, taking the LCM, but we don't need to take the LCM. We can directly go for it, right? So this is a small change. Which now similarly in case of subtraction, the only thing you have to be careful is in addition we can place any digit above. So in case of subtraction, okay, first one solve addition, then what is 6? Solve it. What is the answer? ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है 5 7 One size 17 by 28. Yes, tell me others. 134 by 56. 134 by 56. So 56 cannot be reduced. It can be. So what will be there? One 17 by 28. Yes, Pallavi. So this is 6 into 8 plus 6 into 7 over. Whole 17 to 28. Okay, right. So that means 90 by 56. Yes. Then 45 by 28. Then 45 by 28. Now what can be done? So 28. That means 1 17 by 28. 30. Yes, tell me. 117 by 28. No? One whole 17 by 28. 17 आता है ना, remember. ठीक है. ठीक है. अब Yes. क्या? So it can be written like this also. 170 28. Yeah. Got it? Okay. Similarly, if it is subtraction,
7 by 8 minus 4 by 5. Same rule applies. No need to find LCM, nothing at all. 40, 35, 32. So 3 by 40. Is it clear? Yes, sir. Any doubt, any questions you have? Okay. Do पल्लवी मुझे 5th की बुक से और क्वेश्चंस भेज देना so that I can share with others also. ओके सर। आप ही ने बोला ना 5th की बुक में? हाँ 5th की बुक में है। चलिए सॉल्व कीजिए. Three 1 by 2. Yes. Three 1 by 14. Yes, Ume. Pallavi. So this was all in. Now multiplication of fractions is very easy. You can do it. Now one more type of questions which generally comes. See, what we are discussing today is very small topics which come like percentage. सर मेरा 1 whole 3 by 7 आ रहा है. क्या आ रहा है? 1 whole 3 by 7. This should be the answer. 3 से 1 by 14. कहाँ गलती की? देखो 5 4 by 7 minus 2 1 by 2 था. क्या हुआ इसका? 5 minus 2 3. 3. Then बोलिए. तो 5 और ये अगर इसको कर दें तो 3 आ गया प्लस. yes. अब हमने इन दो को करना 4 by 7 minus 1 by 2 अगर चेक कर लेते हैं तो 8 minus 7 by 14. तो कितना सिंपल तो था. इट इज 3 1 by 14. कहाँ गलती हुई? हाँ मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा था. 2 whole 2 by 1 लिखा था मैंने. 2 by 1 कैसे होगा नीचे? 1 नीचे देंगे तो वो फ्रैक्शन कैसे होगा? हाँ हाँ सर. अभी भी ध्यान वीटीपी में है. हाँ अभी तो थक गए होंगे. सुबह से चल रहा होगा आज. नहीं आज एक ही सेशन था रात को. अच्छा वो मीटिंग थी. वो मीटिंग था. मीटिंग का मतलब वो वही का सेशन. So you were supposed to call different people. Yes. Organize the course and आपने बुलाया नहीं मुझे. आपने किया है ना ऑलरेडी इसीलिए. हाँ तो वही तो आ सकते हैं जिन्होंने किया हुआ है. हम्म. उन्हीं को तो बुलाते हैं वो लोग. हाँ. चलिए कोई बात. So then a small topic is their percentage. Now very easy thing, but what happens? The calculation was a difficulty. Otherwise, the simple formula you have to write. Remember, whenever you are asked to find a percentage of B, it's very simple. A into B over 100. So this is the only formula you need to remember.
I'll give you one example. 5% of, see, first I'll give you a simple example, 60. Because this you can calculate, it should come out to be 3. Right. So how we do it? So A is 5. B is your 60. So 5 into 60 divided by 100. So 30 divided by 10, that means 3. Right. 17% of 80. So nothing. 17 into 8 divided by 100. The only thing is earlier, now this is simple numbers I'm giving. If this number was 88, so now we have to solve using Urdhva Sutra over here. Right. So did you practice that Antre Dosh ke? वो हो गया तो उससे एडवांस भी थोड़ा सा टॉपिक्स बताऊंगा कभी. See, more you'll practice, more questions will be there. If you'll not practice, no questions would be there. So what is this answer? 17% of 88. Find out. What is the answer? 48.96. 40. 8.96. Sorry, 14.96. क्या हो गया मैंने कहा? 14.96. Yes, Umesh. So this is all in this topic. आप इसमें जितने मर्जी क्वेश्चंस कर सकते हैं. The only thing is now you need to apply for multiplication. You can apply Urdhva Sutra. Any questions you have, but practice more on LCM, HCF. I am again and again saying. Book के मैंने सारे questions कर दिए. Exercises we have solved everything. Still, I would say go to Quora, check number of questions. You will find. Sir, I have one question of polynomials. Yesterday we have done the division of polynomials. Actually, I have tried, but I don't know where I made mistake. Give me the So question. will you show? Yeah. 5x4 x to the power 4 minus 45 x to the power 3 plus 52 x to the power 2 minus 18x plus 20 divided by 5x square plus 2. Plus. 2. So first thing, is this complete? Yeah. Is this complete? No. No, 0x. X. So we'll do 5x square plus 0x plus 2. This is one thing. Not Yeah. still. Now you cannot have coefficient. So you'll write like this: 0 and minus 0 and minus 2 by 5. Okay. तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था 2x plus 5 वाला, 2x plus 7 या 2x plus 5, याद है? Yes. तो x Yes, मैंने sir. क्या किया था 7 by 2, जो भी था. I don't remember the figure. That was the reason I gave you. Now solve it. Okay, sir. Got it? Yes. Any other question? Yes, Umesh.
नो नो सर। यस पल्लवी आपने किया? नहीं, yes. चलो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद न्यू बुक 6 स्टेप। ये बस करें, कल से न्यू कल बुक तो कभी कल से। आया? कल कभी आया? सूरज को पूछना आज क्या हो गया, आज कौन सी क्लास है उसकी। उसकी आजकल क्लासेस बहुत हो रही मिस। So we'll start from next class. We'll start with the 6th step. ठीक है, चलो। So any questions पल्लवी, इथर आपको नहीं समझ आ रहा था ये उसी टाइम पूछते, इतनी देर वेट नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर मेरी क्लास चल रही है, आई वोंट आंसर यू, बट आई कैन गिव यू द हिंट इमीडिएटली। Okay, sir. क्वेश्चन बड़ा होना तो अच्छा लगता है, बिल्कुल स्मॉल सा टॉपिक और हम उसके कारण डिले कर रहे हैं, व्हाई? गॉट द पॉइंट? चलो, ओके देन, डू इट, बाय। Thank you, sir.